Hello everyone. Today we'll be starting with the first chapter of economics, that is development. Now we should know that what is development. Development basically means progress. आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एम्स होंगे, गोल्स होंगे एंड यू वांट दैट एम्स और गोल्स टू बी अचीव्ड। और अगर वो गोल्स और एम्स आपके अचीव हो जाते हैं इन फ्यूचर में, so that time it will be a development for you. So basically development is an idea, and this idea can be about an individual or it can be about the country. अगर हम कंट्री की बात करें तो एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, so that means for a particular country, the notions, yeah, the thinking of development is when the country is able to provide better facilities to its citizens. एंड सिमिलरली एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या है? जब उसकी एस्पिरेशंस, उसके डिज़ायर्स फुलफिल हो जाए, जो भी उसको उसको उसकी वांट है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, अगर वो उसका डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाए, तो दैट विल बी अ डेवलपमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. Now we'll be discussing the three main principles of development. The first one is different people have different development goals. Second one is what may be development for one may not be development for other. And the last one is for development, people look at a mix of goals. We'll be studying all these three principles of development in detail. Now let's have a look on the first principle of development, that is different people have different development goals. That means different लोगों के development goals भी different होते हैं. Like if you ask your friend, so if he wants to become a doctor and you want to become a chartered accountant, तो आपके भी development goals आपके friends के development goals से different हैं. So the different people have different development goals. Why? Because life situation, or we can say the thinking of different people differs from each other, and this is the reason that different people have different development goals. If we see this table, तो यहाँ पर different categories of persons हैं, and we can see that different categories of person have different development goals. Like if we see the first one, it is about landless rural laborers. अब landless rural laborers कौन होते हैं? The ones who don't have their own land. तो एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? ऑब्वियसली इफ ही डजंट हैज हिज ओन लैंड, तो वो किसी के अंडर काम कर रहा होगा. सो ही उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको मोर डेज ऑफ वर्क हो, उसको बेटर वेजेस मिले, सोसाइटी में उसको इक्वालिटी मिले, और लोअर प्राइस पे उसको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो. ऑब्वियसली दैट पर्सन विल नॉट बी दैट रिच, तो वो चाहेगा कि उसको जो फूड ग्रेन्स हैं, जो उसको फूड सप्लाई है, वो गवर्नमेंट चीप रेट पर अवेल करे. Then we have a rich farmer. We also know that rich farmers don't work on the fields themselves. उन्होंने अपने अंडर लेबर वर्क रखी होती है, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उनको चीप लेबर मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. देन हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, वो उनकी जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो, उनके रेट, उनको अच्छे रेट्स पे उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सेल हो सके. एंड दे शुड गेट चीप इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीनरी. इनपुट्स क्या होते हैं? जो भी चीज़ें आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू ग्रो द क्रॉप्स, दैट आर इनपुट्स. सो एक रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उनको ये इनपुट्स चीप रेट पर अवेलेबल हों, लाइक सीड्स, मशीनरी. देन व्हाट विल बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर अ ट्रेडर? नाउ हु इज अ ट्रेडर? ट्रेडर इज बेसिकली अ मर्चेंट जो गुड्स की सप्लाई करते हैं. ये खुद कोई गुड्स नहीं बनाते हैं, बट ये एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स की सप्लाई करते हैं. So what will be a development goal for a trader?
उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिले, उनको बेसिकली उनको उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उनको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मिले, उनको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिले, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स की सप्लाई अच्छे से कर सके. देन another development goal for trader will be to pay less taxes to the government. उनको चीप लेबर मिले जिनके थ्रू वो गुड सप्लाई कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड हाई प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो दे शुड गेट गुड अमाउंट ऑफ प्राइजेस फॉर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So, we have learned the first principle of development, that is, different people have different development goals. Now, let's move to the second principle of development, that is, what may be development for one may not be development for other. इसका मतलब है कि कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, बट इट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन. ठीक है. हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और इसी बेसिस पे हम सेकंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन. दैट मीन्स कोई चीज़ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, but the same thing may not be development for the other person. We'll be studying this principle with the help of two examples. The first one is, a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. This example says कि गर्ल्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले, वही उनके लिए डेवलपमेंट है, और उनके ब्रदर भी उनके साथ हाउस होल्ड वर्क शेयर करें, लाइक दे शेयर द वर्क विद देयर मदर्स, बट दिस मे नॉट बी लाइक बाय देयर ब्रदर्स. सो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी कि गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, दैट दे शुड गेट फ्रीडम, opportunity, and their brothers should also share their household work. But this development goal of girls may not be liked by their brothers, जिनकी may be thinking ये हो कि no, girls should not be given that much freedom and opportunity. So here in this example, the development goals differ between the girls and the boys. Now let's move on to the second example. The second example says, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं दैट देयर शुड बी मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिकॉज डैम्स वी ऑल नो दैट डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट वांट कि इन ऑर्डर टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी more and more construction of dams, but this construction of dams may not be liked by the tribals, जिनके जो उन एरियाज में रहते हैं और उनको पता है कि अगर यहाँ पर डैम्स बन गए तो दिस में सबमर्ज द लैंड. मतलब वो सबमर्ज क्या होता है कि अगर जहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे वहाँ पर तो वाटर बॉडीज हो जाएंगी, तो वहाँ पर उनका लैंड वाटर बॉडीज में मिक्सअप हो जाएगा, so they won't be able to live their life there, so they have to shift their household from that particular place to another place. So tribals will not like the idea of construction more and more dams, so they might resent this. Resent means कि वो इस चीज के लिए मना करेंगे और वो चाहेंगे कि अगर डैम्स बनना भी डैम्स कंस्ट्रक्ट भी हो तो स्मॉल चेक डैम्स हो, so that एरिया ऑफ लैंड कम लगे और उनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय ना हो. सो सेकेंड एग्जाम्पल से एक और कंक्लूजन निकलता है दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. इट मे बी डिस्ट्रप्टिव फॉर द अदर्स.
अभी इसी एग्जाम्पल में देखो, अगर डैम्स बन जाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स will be development for the industrialist, but this may disrupt the land of uh, tribals who used to live on that particular land. तो इससे हमें क्या पता लगता है that what may be development for one may not be development for the other, it can be even destructive for the other. अगर डैम्स बन जाएंगे तो ट्राइबल्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. सो with this we are done with the second principle of development, that is, what may be development for one may not be development for the other. Now we'll be discussing the last principle of development, that is, for development, people look at a mix of goals. That means, जब भी लोग अपनी डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं तो वो लोग सिर्फ डेवलपमेंट इनकम के बेसिस पर कंसिडर नहीं करते. पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. ऐसी जॉब जहाँ पर इनकम तो बहुत अच्छी है बट वहाँ पर आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, फ्रीडम नहीं है, आपको सिक्योरिटी नहीं है कि आप वेदर यू आर परमानेंटली एम्प्लॉयड देयर और नॉट, आप कभी भी वो जॉब प्रेफर नहीं करोगे. ठीक है. सो व्हेन पीपल कंसिडर फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. Let's discuss this principle with the help of an example. Let's take job A and job B. अब देखो, job A provides you less pay but may offer regular employment that enhances the sense of security and give facilities to your family. जॉब ए है जहाँ पर आपको सैलरी कम मिल रही है बट वहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी है कि वो आपको बिना कोई वैलिड रीज़न के कब नहीं निकाल सकते और आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि आप यू हैव टू वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स and remaining hours and in the remaining hours you can give your time to your family. But जॉब भी ऐसी है जहाँ पर आपको पे तो बहुत हाई मिल रही है बट देर इज नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. जॉब बी में आपको पे तो बहुत अच्छी मिल रही है बट आपको वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी वैलिड रीजन ना भी हो तो देन ऑल्सो दे कैन थ्रो यू आउट ऑफ द जॉब्स एंड they are making your time they are not making your time available for your family और आपको कोई फ्रीडम नहीं है वहाँ पर, आप ज़्यादा हॉलीडेज नहीं डिमांड कर सकते, आपको फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा जॉब बी में. तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली वील प्रेफर जॉब ए बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. वहाँ पर अगर आप जॉब करोगे तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो स्टेबल रहेगा. Job B no doubt provides you a good amount of salary, but other things are missing in job B. So this statement can come to through this statement we can come to a conclusion that for development people look for a mix of goals. सिर्फ income ही criteria नहीं होता. For development there are other things also which are equally important and they are freedom, security and respect from others. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. With this, we'll end our today's session. I hope the topics are clear to you. Thank you.